बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम और इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर को स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। सिस्टम को दो टाइप्स में तकसीम किया गया है, नेमली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन दीज टाइप्स हेल्प अस apply systems theory across various fields. Natural systems are naturally built and occur in nature without human interventions, while जबकि artificial systems are created by humans to fulfill the specific needs of our purpose. लेकिन नेचुरल सिस्टम जो है वो कुदरत की तरफ से ही बना बनाया है, इसमें इंसान की कोई इंटरवेंशन नहीं है, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम इंसान का बनाया गया है अपनी ज़रूरियात और मकासद को मद्देनजर रखते। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी नेचुरल सिस्टम क्या होता है। नेचुरल सिस्टम आर दोज दैट एग्जिस्ट इन द नेचर एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन involvement. They are governed by natural laws and process. Natural systems are of the various forms and sizes, from very tiny objects like atoms and cells in our body to very huge like forests, oceans, and cosmos. Following are examples of some natural systems that exist in the natures. नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम की, इसके फर्दर सब सिस्टम्स की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या फिजिकल सिस्टम्स। फिजिकल सिस्टम्स आर composed of physical components and governed by the law of physics. They include यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फिजिक्स के लॉज का की इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, फिजिकल सिस्टम कहलाता है। They include things ranging from the subatomic particles, atoms to planets, stars, galaxies, and the cosmos. Physical systems, likely any kind of matter, emerge from the interaction of electrons, protons, neutrons, and subatomic particles, which are governed by the electric and atomic forces. For example, hydrogen gas is formed when an electron, proton, and neutrons combine following the rules of physics and natural force. सेकंड हमारे पास है इसी की टाइप्स, केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व सब्सटेंस एंड their interactions, transformations, and reactions. They are governed by the law of chemistry. Chemical systems emerge from the physical systems when atoms and molecules interact and bond according to the chemical principle, forming new substance. For example, a chemical system like water is formed when the hydrogen atom bound with oxygen atom following chemical rules and reactions. अगर हम नेक्स्ट थर्ड टाइप की बात करें तो वो हमारे पास है biological system. Biological system consists of living organisms and their interactions. They are governed by the biological process such as growth, reproduction, and metabolism. Biological system emerge from the chemical system when molecules interact in complex way to form living cells, which they organize into tissues, organs, and organisms. यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम टोटली जानदार ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होता है और उनके बाहमी इंटरेक्शन पर होता है, और इसके अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स वे ऑफ फॉर्मिंग यानी सेल्स विच देन ऑर्गेनाइज टिश्यूज ऑर्गन और इनके बाकी पार्ट्स के मुतालिक होता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है साइकोलॉजिकल सिस्टम। सो साइकोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व द माइंड एंड बिहेवियर। इसका इन्हसार इंसानी दिमाग और उसके रवैये पर होता है। दे इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशंस एंड मेंटल प्रोसेस governed by the principle of psychological system emerge from biological system and they
And when the brain, physical and chemical process give rise to thoughts, emotion and behavior, which are influenced by an individual experience and environments. Artificial systems. Artificial systems are created and developed by the people so that इसको इंसान का बनाया हुआ ये एक सिस्टम है जो फिलफिल द सर्टन फंक्शन एंड एड्रेस सर्टन इश्यूज मुख्तलिफ मसाइल और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है. दिस सिस्टम कैन बी स्मॉल एज अ वील अ लार्ज एज अ यूनाइटेड नेशंस. यानी कि अगर सिस्टम की बात की जाए सबसे छोटा हमारे पास वील और सबसे बड़े हमारे पास क्या यूनाइटेड नेशन. ईच सिस्टम इन डिजाइन वेरी डिलिबरेटली टू परफॉर्म द टास्क. किसी भी टास्क को मुकम्मल करने के लिए कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है. इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू वेरियस इश्यूज इन डिफरेंट सेक्टर्स. Artificial systems are the vital part of con- contemporary contemporary society because they reinforce productivity, solve complex problems, and improve people well-being. There are systems such as knowledge management system, engineering achievement systems, and indeed social systems, which are framework of the success of human civilizations. There are different types of artificial systems, some of which are described below. यानी कि आर्टिफिशियल भी सिस्टम भी मुख्तलिफ इकसाम का है जिसमें से चंद भी हैं. तो अगर हम सबसे पहली टाइप की बात करें वो हमारे पास है जी नॉलेज सिस्टम. A knowledge system is unique because it is developed to capture, process, facilitate, store, retrieve and manage information. इसको डेवलप किया गया है किसी चीज़ को कैप्चर यानी कि इमेज लेने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, फिर स्टोर करवाने के लिए और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए. सच सिस्टम फैसिलिटेट इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज effectively for the purpose of discussion making, learning and problem solving. अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम की तो वो हमारे पास है इंजीनियरिंग सिस्टम्स. Products developed by engineer are complex framework or devices that apply engineering concept to perform certain tasks or solve technical challenges. These are some examples of how engineers of various types develop systems according to their own special knowledge and perspective given to them through their original vision and approach. अगर हम नेक्स्ट थर्ड टाइप की बात करें तो वो हमारे पास है सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम. Concentrations on development such as construction, houses, road, bridge, and even maintaining these structures. यानी कि ये तमाम की तमाम टाइप्स जो हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में आती हैं. फॉर इंस्टेंस स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू प्रोवाइड द पैसेज ओवर वाटर, वैली और रोड इन टर्न टू अ ब्रिज. मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम हमारे पास क्या जी engage in planning and creating the devices that make utilize of force from outside accomplish work. For instance, a robotic arm applied in assembly lines for packaging of product in factories. थर्ड अगर हम टाइप की बात करें तो वो हमारे पास है केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम. Focus on converting raw material into the useful product through chemical process considering internal molecular interaction. For example, a water treatment plant that purify water using the chemical process like coagulations and filtrations. Electrical engineering system involve the study and the application of electricity, electronic and electromagnetism to develop the electrical system. For example, a home automation system that control lighting, heating and security using the smartphone apps. This system uses electric signal and power to operate various home appliances and systems remotely. Software engineering systems
is the process of designing, developing, and maintaining software to perform the certain tasks and reducing the errors. For example, in the online library system that track books, user as well as borrowing and returning records. यानी कि लाइब्रेरी का रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके जरिए हमें पता चलता है कि कौन से यूजर ने बुक ली है, किसने रिटर्न की है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल सिस्टम्स। Social system refer to the structure framework established by individuals to effectively handle social interactions, organizational governance, and the communal endeavors. The basic goal of this system is to maintain the order, provide services, and facilitate social concessions के मुतालिक information provide करना. Academic institutions are the entities that provide the educational service to students. यानी इनका काम क्या होता है, students को educational services provide करना. Services में क्या होगा जी, school, colleges and universities are example of educational institute that provide the instructions, the use of administrative, teaching and the support staff. Next हमारे पास है government. Government क्या होती है? Organizational institute that are validly authorized authority and control over a community or country. Examples including the democratic systems where representatives are elected and the authorized regimes where power is centralized. Next organization हमारे पास क्या होती है? Organization or entity formed to the achieve specific goals and are oftenly structured hierarchically with well-defined roles and responsibilities. Example include corporations like Apple and non-profit organizations such as ED foundations. तो ये थे हमारे पास सेकंड लेक्चर के टॉपिक्स। तो इन नए आने वाले स्टूडेंट्स से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है ये भी थ्योरेटिकल बेस है सारा, और इसको हम स्पेशली थ्योरेटी बेस ही पढ़ेंगे और इसको आपने रेडी करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।